Next very important 15th salient feature of Indian Constitution is emergency provisions. Well, the Indian Constitution contains elaborate emergency provision to enable the president to meet any extraordinary situation effectively. In fact, the rationality behind the incorporation of these provisions is to safeguard the sovereignty, unity, integrity, and security of the country. In fact, the democratic political system and the constitution. The rationality behind the incorporation of these provisions is to safeguard the sovereignty, unity, integrity, and security of the country, the democratic political system, and the constitutions. So, we need to understand that one of the most important features of Indian Constitution is all about emergency provision. And again, in our constitution, there is a special provision which has been made for such issues, and this power of declaring the emergency is given to the president, and president have to use it rationally only as and when if there are threats to India's national security, as and when there is a threat to our sovereignty. So whenever there is a question or a threat to our sovereignty, presidents have the right to declare emergency, basically to safeguard the sovereignty, unity, integrity, and security of this country, democratic political system, and to protect the constitution. हमारे भारत के संविधान में इमरजेंसी प्रोविज़न का भी उल्लेख किया गया है, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी प्रोविज़न जो लिखी गई है वो प्रेसिडेंट सिर्फ उस टाइम पे यूज़ करेगा जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आती है, और जब भी वैसे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आती है तो वो रैशनली उसको यूज़ करना पड़ेगा. और ज़्यादातर ये इमरजेंसी प्रोविज़न एक तो हमारे सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं, हमारे यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री के लिए कर सकते हैं. उसके अलावा अगर हमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को बचाना है और सबसे ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है, तो ये इमरजेंसी प्रोविज़न प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले सकता है और डिक्लेयर भी इम्पोज भी कर सकता है. और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसके अलावा ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेलेंट फीचर भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. मूविंग फॉरवर्ड, there are basically three different types of emergencies. Namely, first we have national emergency, and national emergency can be declared on the grounds of war or external aggression or armed rebellion under article 352. जो सबसे पहली जो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं प्रेसिडेंट, वो आर्टिकल 352 के अंदर उसको इम्पोज कर सकते हैं. और ये कब कर सकते हैं? जब भी अगर कभी वॉर होती है, फुल फ्लेज बड़ी वॉर होती है, या फिर इंडिया के अगेंस्ट कोई एग्रेशन होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर कोई आर्म्ड रिबेलियन होता है हमारे देश में, उसको काबू में लाने के लिए, शांति को स्थापित करने के लिए ये इमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट. और ये एकदम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 में बहुत अंकित किया गया है कि नेशनल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, और इफ देयर इज एनी आर्म्ड रिबेलियन which would question or which would put our sovereignty, unity and integrity of this country in the danger. If such situation arise, then the President of India has the right to declare national emergency under Article 352. The next very important emergency is state emergency. And again, this has been also called President rule or Governor rule. And these can be imposed on the grounds of failure of constitutional machinery in the state under Article 356. So basically,
whenever and wherever, if constitutional machinery is failing or it has already failed in a particular state, in that situation, if there is a law and order problem, example, we have many instances wherein the state government does not enjoy the full majority, especially when they form their government in a coalition and one partner of the coalition walks out, then that government comes under minority. And when it comes under minority, it is always the opposition party who passed a no confidence motion. And if they fail to produce those numbers, if they fail to produce their majority in the house, that is at the state legislative assembly, then that government will collapse. And once that government is collapsed, the next strong party is supposed to form the government. But even, let's say, even that party does not comes with a majority, then the governor on behalf of the president have to act immediately, because the functioning of the state has to be on. It cannot be paralyzed for a long time. And therefore, when there is no takers to form the power or to form the government, governor recommends his suggestion to the president that there shall be a state emergency declared in a particular state until sometime next elections are held, or until some party comes together and form their own government. And this state emergency can be declared under article 356. दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट एमरजेंसी जो है वो स्टेट एमरजेंसी है, और उसको कभी कभी प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं या फिर गवर्नर रूल भी कहते हैं। ये स्टेट एमरजेंसी या फिर गवर्नर रूल कब होता है, कब इम्पोज होता है? ये इम्पोज उसी टाइम पे होता है कि जब भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो स्टेट की है वो फेल कर जाती है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल कब होती है? अमूमन ज़्यादातर ऐसे सिचुएशन आते हैं कि जहाँ पर एक दो तीन पार्टियाँ मिलकर एक अपनी सरकार बनाती हैं स्टेट में, उनके बीच में कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग रहती है और वो अपना कामकाज करती है। कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद ये ऐसा लगता है कि ये एक साथ चलने वाले नहीं हैं, तो उनका जो एक मेंबर रहता है, उनका जो एक उस कोalition का जो एक पार्ट रहता है वो अपना सपोर्ट खींचता है, मतलब वो सरकार छोड़ता है। जब भी ऐसे सिचुएशन आती है तो वो जो सरकार जो बनी है स्टेट में वो माइनॉरिटी में चली जाती है। जब माइनॉरिटी में वो सरकार चली जाती है तो ओपोजिशन पार्टी को एक मौका मिलता है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने का, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के बाद अगर वो सरकार अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने में फेल हो जाती है तो फिर गवर्नर को दूसरी पार्टी को चांस देना चाहिए कि अपनी सरकार बनाए। लेकिन सिचुएशन ऐसा होता है कभी कभी स्टेट में कि किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं रहता है या फिर कोई भी पार्टी एक साथ मिलकर काम नहीं करना चाहती है, तो उस सिचुएशन में उस दौरान स्टेट का कामकाज चालू रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाद में गवर्नर उनको कुछ दिन देता है कि आप एक हफ्ते में देख लो कुछ होता है तो। अगर एक हफ्ते के अंदर भी कुछ नहीं रहता है या फिर जो भी उनको टाइम दिया है उस टाइम के दौरान अगर वो अपनी सरकार नहीं बना सकते हैं तो फिर गवर्नर अपने रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को भेजता है कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, किसी के भी पास बहुमत नहीं है अपनी सरकार बनाने की, इसीलिए इस स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। और इसी तरह अंडर आर्टिकल 356 के अनुसार स्टेट इमरजेंसी लगती है टिल दे कंडक्ट next election and they form the government. So this is about the second most important type of emergency, that is state emergency. Third very important type of emergency is financial emergency. Well, the financial emergency can be imposed on the grounds of a threat to financial stability or credit of India, and that can be declared under Article 360. In short, this emergency so far we have not seen, although we have been very close to financial emergency, especially 1990s when India was running short of reserves. So that was a one instance where India almost was close to financial emergency. Anyways, so financial emergency is basically when there are threats to financial stability of the country. If the country start losing its value of the economy, its currency, or if there is an issue when it comes to the credit of India and we cannot even manage
the shortfall in our economy, at that point of time, the government of the day under Article 360 can impose financial emergency in India. As I said, so far we have not seen what is a financial emergency looks like. So let's hope that such situation never comes in India. जो तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट एमरजेंसी है जो प्रेसिडेंट लागू कर सकते हैं वो है फाइनेंशियल एमरजेंसी। और फाइनेंशियल एमरजेंसी अमूमन जो लागू होती है वो सिर्फ जब हमारी इकोनॉमी एकदम गिर जाएगी, उसका वैल्यू एकदम ज़ीरो पे आ जाएगा, या फिर हमारा जो क्रेडिट जो रहता है जिससे हम दूसरों देशों के बीच में जो बिज़नेस करते हैं वो एकदम नीचे गिर जाएगा, उस टाइम पे इन्फ्लेशन बढ़ जाएंगे और ये जो सिचुएशन है वो हद से आगे निकल जाएंगी। और उस दौरान जब भी ऐसा थ्रेट आता है हमारे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, जब हमारा पैसे का वैल्यू नीचे जाता है, तब सरकार ये फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर सकती है और ये इम्पोजिशन होगा आर्टिकल 360 के अंतर्गत। एज ऑफ नाउ जैसे मैंने बोला, हमने अभी तक कोई इमरजेंसी, अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं देखी है, लेकिन एक समय था वी वे वेरी क्लोज, हम बहुत नज़दीक आ चुके थे फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए। वो दौर था 1990 में जब इंडियन इकोनॉमी का वैल्यू एकदम नीचे जा चुका था, हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते का रिज़र्व था और इमीडिएटली कुछ ना कुछ डिसीजन लेना था। अगर वो डिसीजन उस टाइम पे नहीं लेते तो गॉड नोज क्या सिचुएशन हो जाता था। सो इसीलिए उस टाइम के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो आगे जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बन चुके हैं, उनका ये सुझाव था कि हम लिबरलाइजेशन करें। और उसी दौरान भारत का जो सोना था वो बहुत से बाकी देशों में गिरवी रखा गया और वहाँ से जो हमने डॉलर्स लाए उससे कुछ वक्त हमें मिला टू स्टेबलाइज आवर इकोनॉमी। और आगे चलने के बाद लिबरलाइजेशन भी हुआ और उसका जो फ़ायदा रहा वो हमारी इकोनॉमी को भी हुआ और स्टेबिलिटी को भी हमने मजबूत कर दिया। सो दिस इज़ द ओनली सिचुएशन वे वी reached very close to financial emergency in 1990s. So these are the three most important powers or the emergency provisions which the President of India has, and these are categorically mentioned in our Indian Constitution, and therefore this point, emergency provision, point number 15, is one of the most important salient feature of Indian Constitution.